क्या होता है? वेलकम देवोत्तम. So the very first question is किस किस का थियरी हो गया है? Like how many of you have done theory properly? Jacob, Amrita. Okay, so you guys have done theory, right? So I did not do theory as good. I only did the part where we had to submit assignments. Okay. After that, I just went राम भरोसे गए थे. So the major thing is how much is the difference between the assignment ones and the later weeks? I guess it's from week 8, I guess. Hmm. Hmm. Ah, yes. मैं जैसे अभी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को अप्रोच करूंगा तो मैं सोच रहा हूँ उसको एनालाइज करूँ वही निकाल के उसका जो अपने थ्योरी में पढ़ा रखा था ऐसा. Okay. So if I can, let me share the screen now. एक बार. What is about Coursera dashboard? About Coursera के 10 share. So जैसे वीक 1 में मेजर ये इजी चीजें हैं, है ना? इकोनॉमिक्स क्या है, ट्यूटोरियल्स क्या एंड ऑल. ये कोई एक बार नोट्स देख लेगा तो उसका हो जाएगा. हाँ, मतलब आप कौन सा बिजनेस है उस हिसाब से मेरे हिसाब से इसमें डायरेक्ट वीक 5, 6, 7, 8 और अगर जरूरत पड़े तो यस आगे का देख लेना यस यस ऐसा. यस वही इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कौन से वीक्स हैं. लेट्स से मैं डेटा लेने जाता हूँ पर मुझे पता ही नहीं कि क्वेश्चन किस तरह बनाना है. आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच द बिजनेस एंड मेक अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. एक्चुअली जैसे सबसे बेसिक चीज है जैसे कि किसी भी बिजनेस के कौन से एसक्यूज इसको फोकस करने चाहिए तो उसमें परेटो एनालिसिस पोर्टफोलियो एनालिसिस ये सब चीजें जो वीक 5 वीक 6 के अंदर दे रखी है. वीक 5 to 6, राइट? हाँ, वो इकोनॉमिक्स काम आ डेटा, सकती है. वॉल्यूम परेटो, ऑल्दो ट्रेंड एनालिसिस एंड ऑल. ऑल्दो ऑल्दो आईआईटी मद्रास वालों ने तो इन चीजों के लिए मना ही किया है कि मतलब पर हाँ ये चीजें मतलब ये क्लियर आइडिया दे देगा थोड़ा मतलब अच्छे से ओके. कि कैसे शुरुआत में अप्रोच करना है. ओके. सो और कोई यस. जैसे मेरा मैन्युफैक्चरिंग मतलब सेक्टर का बिजनेस है तो उसके लिए वीक 7, 8 बहुत सही चीज है उसमें वही जो है. यस वीक 7, 8. ओके. स्क्रैप कॉस्ट, सेफ्टी स्टॉक यानी मैन्युफैक्चरिंग जो क्विक इन क्विक आउट, कितना कितना जल्दी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कितना बेच पा रहे हैं, उस हिसाब से, राइट? वही वही वो परफॉर्मेंस कैसी है बिजनेस की उस हिसाब से ये अपनी इस थ्योरी की चीजें जो अपन इसमें काम ले सकते हैं. हाँ. और बाकी चीजें डिपेंड करती है आपका बिजनेस मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है एक्चुअली. उसमें प्योर मैथ स्टैटिस्टिक्स कुछ भी लगाओ आपका मशीन लर्निंग जो आप लगाना चाहते हो बिजनेस एनालिटिक्स कुछ भी. ओके. सो एक चीज पता करी कि वीक 5 से लेके 12 तक एक बार पढ़ ही लेना है अप्रोच करने से पहले किसी भी बिजनेस को. मेरे हिसाब से हेल्प मिल जाएगी जिससे या जैसे कि कईयों ने मतलब. नहीं पढ़ा, मैंने खाली इतना पढ़ा था कि मेरा इससे असाइनमेंट हो जाए और असाइनमेंट में अपलोड कर सकूं. उसके बाद असाइनमेंट आए भी हम्म, नहीं. सिंस असाइनमेंट आए नहीं, हमने आगे का पढ़ा नहीं एंड एंड टर्म में खाली 30% वेटेज था. हाँ मैं भी पिछले मतलब टर्म में ही कंप्लीट किया मैंने बीडीएम का थ्योरी मेरे को आइडिया है. यस. तो मैंने बेसिकली कई आप बिजनेस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो ना. इन केस आप हाँ मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं तो फिर आप वीक 5 वही पढ़ के क्या करोगे? एक्चुअली बिजनेस को
अप्रोच करो, अपने आपका बिजनेस क्या है उस हिसाब से, जैसे सी द वो थिंग वैसे इज वीक। कईयों को थियरी पता ही नहीं है क्या है। ओके मैंने कुछ कुछ लोग देखे हैं जिनको वीक वन से भी नहीं पता, आई डोंट नो हाउ, बट उन्हें नहीं पता। अब वो प्रोजेक्ट में रो रहे हैं। द थिंग इज अगर किसी को जरूरत भी पता नहीं ही है नहीं कि वीक फाइव में पढ़ाया क्या है। ओके एक्चुअली, सिर्फ वीक 5 और 6 देख लो, क्योंकि वो चीज हर बिजनेस में काम आएगी, पोर्टफोलियो एनालिसिस और परेटो एनालिसिस वाली चीज, 80-20 वाली चीज। ओके बट डीडीएम प्रोजेक्ट में सर ने स्पेसिफिकली कहा कि हाँ पेरेटो नहीं चार्ट है। नहीं यूज करना है। चार्ट नहीं यूज हाँ करना है ना। तो कैसे पर करना किसी, है एनालाइज? लाइक आई एम रियली कंफ्यूज्ड, कौन से टूल्स यूज करने हैं हमें? मेरे हिसाब से एक्चुअली सबसे पहले तो यही चीज अपन को कैसे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पुराने सेशंस देखे थे। उसमें उन्होंने उसमें तो यूज किया सर, है। उसमें तो बढ़ चढ़ के बता रहे थे कि आप सबसे पहले उनके ना एसक्यूज देखो कौन से उसमें, मतलब आज ही मैं वही देख रहा था, पुराने सेशंस आई देख रहा गेस था इट्स टेन जो मंथ्स अपने। ओल्ड राइट। क्या चीज? 10 महीने पुराना है वो। अगर एक हाँ, सेकंड। वो जो अपने उसमें प्रपोजल वाले जो पीडीएफ के अंदर लिंक्स दे रखे हैं, कैप्स्टोन मतलब, वही वाले मैं देख रहा था। तो यस उसके अंदर ही वो बता रहे थे कि ये ना, कि सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए एसक्यूज, देखो उनका क्या है, ये सबसे पहली चीज वही देख रहे थे। तो यस। हाँ मतलब मैं जैसे सोच रहा हूँ अप्रोच करने का, सबसे पहले उनके एसक्यूज वही 80-20 वाली चीज निकाल के, उसके बाद फर्दर डिफरेंट डिफरेंट चीजें उनके डेटा से खेल खेल के नए नए ग्राफ्स बना बना के, अलग अलग टाइप के, मेरे हिसाब से तो ये इस तरीके से अप्रोच करने वाला हूँ। ओके सो जस्ट एक बार देख लेना कि कौन सा वाला है, ये वाला था ना राइट। नहीं नहीं, एक्चुअली अपना प्रपोजल वाला है क्या, वो जो पीडीएफ वो पीडीएफ तो, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स भी मुझे चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कहाँ होंगे, किसी को आइडिया है? वो आपका डैशबोर्ड में माई सेक्शन, डैशबोर्ड में जाके लॉगिन करो ना, मतलब माई डैश प्रोजेक्ट, माई करंट प्रोजेक्ट्स में। माय करंट प्रोजेक्ट्स। ओके बिजनेस डेटा मैनेजमेंट कैपस्टोन। ओके है आई गेस। ये अपना स्टूडेंट ईमेल डालना, क्योंकि उस वाली वीडियो के अंदर पहली चीज उन्होंने ये बोली कि आप मतलब एसक्यूज देखो, एसक्यूज देखो, तो मेरे हिसाब से वो तो देखना ही पड़ेगा कि 80-20 वाली चीज, उसके बाद बाकी चीजों पे मतलब आप फोकस कर सकते हो। पर हाँ, वो अपन को लगाना नहीं है कुल मिला के ये। ओके चलो कहाँ एज होंगे वो एज डॉक्यूमेंट्स में? सच जो प्रपोजल है वो, लाइक हाउ यू पीपल आर राइटिंग दैट, जो हमें डॉक्यूमेंट मिला है उसी को एडिट कर दें, लाइक उसी के ऊपर एडिट कर दें। नहीं नहीं नहीं, तब प्लेजरिज्म में चला जाएगा वो, क्योंकि 20% प्लेजरिज्म में होगा ना। सी एक तो उनका नहीं, फिगर एक दिख। सेकंड, ये प्रपोजल फॉर्मेट वाला जो डॉक है ना, इसको खोले एक बार। प्रपोजल फॉर्मेट डॉक ओके। हाँ, एक्चुअली वो इनके लिए पूछ रही है कि मेरे हिसाब से मेरे को भी यही डाउट था कि मतलब है तो कंटेंट से ही है, इसी के अंदर एडिट कर करके अपन हाँ कर एडिट कर सकते हैं देते हैं, ये कर सकते हैं एक्चुअली। कोई। हाँ, इसमें ये जो लोगो वगैरह आईआईटी का दिया हुआ है और इंडेक्स वगैरह बनाया, सब ऐसे ही रहेगा ना? हाँ हाँ, ये डाउट मेरे को भी है। मतलब वी नीड दैट। मुझे वही पूछना था कि एज सच किसी का प्रोजेक्ट देखा है क्या, प्रपोजल देखा है किसी ने? प्रपोजल का दिया नहीं है क्या, प्रपोजल का एग्जांपल्स? एक दे रखा था वीडियो वाला, किसी ने वो सेशन ज्वाइन किया हो तो, पर वो रियलिस्टिक मतलब रिलेटेड कुछ नहीं है मेरे हिसाब से तो। वो फायर क्रैकर्स वाला नहीं था? यस ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मेन जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो देख लेते हैं ना। हाँ, बिजनेस एक्चुअली डॉक्यूमेंट। वो प्रपोजल मैं यही बता रहा था, प्रपोजल फॉर्मेट के अंदर नीचे वीडियो के लिंक्स दे रखे हैं। प्रपोजल फॉर्मेट के अच्छा डॉक्स के अंदर। डॉक्स के अंदर ही नीचे नीचे करना, हाँ यस। ये जैसे लेक्चर 1 2 3 इनमें देख रहा था मैं, इसमें सबसे पहली बात ये दे रखी, हर सेकंड में सर ये बोल रहे पहले एसक्यूज देखो, कौन सा क्या कहते हैं एसक्यूज से फोकस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद अभी वाले सेशन में बोला है कि आप परेटो वाला यूज नहीं करना है। करना है नहीं करना है?
मतलब करना तो पड़ेगा, क्योंकि क्या कहते हैं, सबसे पहली चीज तो वही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। यस, एंड दैट इज द थिंग। और सही बात भी है कि कैसे पता चलेगा बिना उसके। वही तो, आप परेटो एनालिसिस लगाओगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं कौन से एसक्यूज पे फोकस करना है नहीं करना है। ओके, सो फंडामेंटली अगर दो क्वेश्चन का भी जवाब, एक एक का तो मिल गया एटलीस्ट, कि फोकस किस पे करना है। वीक 5 से लेके 12 तक अगर किसी को स्टार्ट करना है तो एक बार रिवाइज कर ले, राइट? एक्चुअली वीक 5 6 ही देख लो सिर्फ, क्योंकि वो वाली चीज हर बिजनेस में काम आने वाली है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है तो हाँ 7 8 देखो, और अगर बिल्कुल क्रेडिट रिस्क, बिल्कुल फाइनेंशियल वाला बिजनेस है हाँ। तो ये 10 और 11 भी देखो, ऐसा है। सी सो ये वाला जितना पार्ट है, ये वाला पार्ट जितना है, ये किसके लिए? इम्पोर्टेंट, ये देखना ही देखना है। ओके, मस्ट, राइट, हम्म, मस्ट है। फिर 7 8 फॉर मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, अगर मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग, ओके। एमबीए, वीक 9 एचआर से रिलेटेड हो तो, वीक 9 से लेके कहाँ तक? सिर्फ वीक 9 एचआर का है। एचआर का है, ओके। वो बहुत बेसिक है ये एचआर वाला तो। ओके, वीक 9 भी देख सकते हो, मतलब कि बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है बीडीएम में तो, हाँ। ऐसे। सो जिसे कुछ भी नहीं आता वो वीक 9, वीक 5 6 एंड 9 देख ही ले किसी भी बिजनेस को अप्रोच हाँ, करने से पहले। हाँ, मतलब आइडिया लग जाएगा कैसे क्या है। और 10 11 तो मेरे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फाइनेंस रिलेटेड, क्रेडिट रिस्क एनालिसिस। एक इसमें ए बी एनालिसिस, क्या था, ए बी टेस्टिंग, वो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये फाइनेंस से रिलेटेड अगर है ना? अगर अगर कुछ डिजिटल मार्केटिंग वगैरह चीज में अगर कर रहे हो तो उसमें ए बी एनालिसिस वाली चीज आती है। ओके। ए बी टेस्टिंग, सॉरी। हाँ हाँ, इधर दिखाया था, लेट मी शो यू दिस, हाँ, है ना? ए बी, हाँ, हाँ, हाँ। ओके। इनर्ज इकोनॉमिक्स, ई वी टेस्टिंग, ये सब इसमें है। एंड वीक 12, वीक 12 समरी सिर्फ, वीक 12 समरी किस किस की? पूरे कोर्स की समरी। ओके, सो वीक 12 स्किप कर सकते हैं। हाँ, वही। सो ऑल इन ऑल हमें 7 वीक के कंटेंट को देख लेना है बिफोर अप्रोचिंग एनी बिजनेस। अब जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है ही नहीं तो 7 8 देखने का फायदा क्या नहीं, है। वो तो हमें पता चल गया, वो तो पता चल गया, बट एक बार सी मैंने जहां तक देखा था, आई गेस ग्रेडिंग डॉक्यूमेंट में उसमें लिखा हुआ था कि मार्क्स डिडक्शन हो रहे हैं अगर लोगों को आइडिया नहीं है थियरी का। लाइक दे नो कि आपने थियरी पढ़ी नहीं है, आप खाली ऐसे ही पास हो, उसमें क्राइटेरिया दे रखा था। वो वाइवा के लिए होगा। वो वाइवा के लिए होगा भाई। ओके, सो स्टिल उसे पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है, ओके, मेरे फाइन, हिसाब से। डन डन। देन वीक 5 6 एंड 9 आर मस्ट। 7 8 10 11 टाइम मिले तो कर लो। हाँ, पहले सबसे पहले जाके बिजनेस ढूंढो, मेन तो ये है। हाँ, उस क्योंकि पॉइंट पे भी इसमें आते हैं, उस पॉइंट पे भी आते हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क है, रिलेशन बहुत कम है। यस यस। सो थियरी का पार्ट खत्म हो गया। अब आपने बिजनेस कैसे किया था? हाउ डिड यू अप्रोच योर बिजनेस? एक्चुअली मतलब मेरे रिलेटिव है, उनको अच्छे से मैंने क्या कहते हैं पहले मेरा ये समझाया कि कैसे क्या है, तो उनसे अभी डेटा उन्होंने दिया नहीं है और समझाना बाकी है उनको। ओके। तो मैं सीधा यही है कि मेरे को है ना, मतलब आईआईटी मद्रास से मैं बीडीएम प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, हम्म तो अब मेरे को अगर आप हेल्प कर सकते हो हम्म। तो मैं अपनी जो क्या कहते हैं जो मैंने थ्योरी के अंदर पढ़ा है वो मैं यस। इसके अंदर लगा सकता हूँ, ऐसे। आईआईटी मद्रास टैग का पूरा दुरुपयोग करना है। हाँ, बाकी सेशंस देखना, सेशंस तो बहुत अच्छे से सर ने बताया। सेशंस सर अपलोड कर रहे हैं आई गेस, है ना? हाँ, हाँ, वाईटी पे आ रहे हैं। वो कल वाला सेशन भी बहुत अच्छा है। व्हाट वाज बाकी हिज क्या नेम? कहते आदित्य हैं चंडेल। ओरिएंटेशन। आदित्य चंडेल, राइट? कैप्स्टोन प्रोजेक्ट वन डे अगो।
ओके हाँ ये वाला 28 का है, इसके अंदर एक्चुअली कैसे पिच करना है ये सब बताया सर ने। ओके। सो दिस स्पेसिफिक वीडियो हमें वॉच करना है, किस टाइप एक्चुअली का? अगर क्या कहते हैं मतलब ये इसमें बिल्कुल फॉर्मली कोई अगर आपको बिल्कुल जानते ही नहीं हो आप किसी हाँ। बंदे को ऐसे बिजनेस को अप्रोच कर रहे हो तो ये सेशन बहुत बढ़िया है। यस। और बाकी किसी मेरे हिसाब से डेटा अगर आपके रिलेटिव्स में किसी से अगर लेते हो तो वो इजीली मिल सकता है। यस। सो कनेक्शंस का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। एंड हाँ ट्राई करो कि घर क्योंकि पे वो कोई मिल जाए। वही मोर रेडिली डेटा दे देंगे बाकी बिल्कुल आप प्रोफेशनली भी जा सकते हो वो वैसे ज्यादा हेल्प भी करेगा अगर आपको एज अ डेटा एनालिस्ट काम करना है हाँ। आगे जाके। यस, पर वो तो लाइक प्रैक्टिकल स्किल्स में आएगा ना। हाँ वही। सो अगर किसी को पूरा एसेंस लेना है इस पूरे प्रोजेक्ट का कि हाँ मैं तो सीख ही लूंगा अच्छे से जितना ये लोग सिखाना चाह रहे हैं, सो मैं इसे हम्म, पूरा अच्छे से क्या कहते हैं जाऊंगा, एक रैंडम बिजनेस को अप्रोच करूंगा, पूरा डेटा रॉ लूंगा एंड ऑल। ओके। हम्म। तो आपने कौन सा डेट आप कौन से बिजनेस के पास गए पहले अभी तक? एक मैन्युफैक्चरिंग मार्बल कंपनी है उसके पास गया था मतलब मेरे रिलेटिव्स की ही कंपनी है वो। ओके। उनको थोड़ा और समझाना पड़ेगा तब जाके डेटा देंगे वो सर। अच्छा, तो वो घर वाले भी डेटा नहीं दे रहे? हाँ तो क्या कहते हैं मतलब अब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं ना यार अब क्या ही बताऊँ। यस यस यस। फाइनेंशियल डेटा देने में टैक्सेशन हाँ के इश्यूज हो सकते होते हैं। वही। हाँ, दैट अरे दैट सब मतलब सब लोग एक नंबर का काम भी करते हैं दो नंबर का काम भी करते हैं। यस, उनको इवन दैट डर टाइप। रहता है कि दो नंबर वाला काम पकड़ा ना जाए। हाँ, दैट पता चला हम लोग हमारा प्रोजेक्ट वो भेज रहे हर हैं, आईआईटीएम वाले ईडी की रेडे करा रहे हैं। वो उस हर मतलब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ईडी यस, की दे रेड सेड ईडी दैट चली दे पर्ज जाएगी। इट राइट। पर डर सभी को रहता है हर सेक्टर में अभी असल में जाओगे ना हर क्या कहते हैं मतलब आईटी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं हाँ। उनमें दो नंबर का काम होता ही होता है 100% होता है इसलिए। इवन लाइक मेरे मैं अपने फादर के थ्रू जाऊंगा कुछ बिजनेसेस के पास। उनका काम भी लाइक प्रोडक्ट्स का है। स्क्रैप मेटल लेके उसे पिघला के उसके प्रोडक्ट लाइक एल्यूमिनियम एंड ऑल के प्रोडक्ट बना के बेचना। सो मेरे पास कुछ इस टाइप की कंपनीज है। The thing is ना hey, I have one more question. How will they like decide कि हाँ इधर plagiarism हुआ है या इधर ग्रुप में चीटिंग की गई है एंड ऑल, कि हाँ हम इसे गलत कंसीडर कर सकते हैं, हम इसे नहीं करेंगे ऐसा? एक्चुअली इसका आइडिया मेरे को भी नहीं है। तो अगली मीट में जाके पूछना पड़ेगा। मतलब जो जैसे सेकेंडरी डेटा होता है वो क्या कहते हैं वो तो पकड़ लेगा वो अगर आप किसी कहीं से किसी वेबसाइट से उठाया है। नहीं, सेकेंडरी डेटा की बात नहीं कर रहा मैं, प्राइमरी डेटा की बात कर रहा हूँ। लेट्स से कंपनी ढूंढना बड़ा टास्क है राइट। लेट्स से कि मेरे फ्रेंड ने किसी ने कंपनी ढूंढी और उसी कंपनी के सब्सिडरी में मुझे लगा दिया कि हम दोनों एक ही कंपनी से डेटा ले रहे हैं। सेकेंड उसी तरह अगर मैंने ढूंढी तो मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया, लाइक दैट। उसका तो मैं भी कुछ कह नहीं सकता वो तो आईटी वाले ही जाने। ये पूछना पड़ेगा उनसे। सर सो ने एक साइट बताई थी ना जिसमें वो मटेरियल सारा डाल के चेक करेंगे प्लैगरिज्म। यस टर्न इट इन करके है। यस। मैंने उसके अंदर एक्सेस करने की भी कोशिश की थी पर वो शायद सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के बेसिस पे ही होता है वो। नहीं, आप अपना डेटा उसमें डाल दोगे ना मेरी जान क्या तो हो फिर रहा वो ऑनलाइन दिख जाएगा आपका डेटा। वही वही वही। है? यस। सो हाउ डिड यू अप्रोच लाइक बिजनेस, उनको जाके क्या क्या समझाया? क्या मेरे से पूछ रहे हो। हाँ। मैं तो बस यही चीज है अभी और उनको समझा रहा हूँ बाकी अब मैं जाऊंगा उनको है ना अच्छे से मतलब वो पूछ रहे थे मेरे को डेटा क्या चाहिए फिर उन्होंने मतलब अब एक डाउट मेरे को ये वो बोल रहे थे कि मैं डेटा तो दे दूंगा पूरा पर पूरा मास्क करके दूंगा तो मास्क डेटा चल जाएगा हाँ, मास्क किसी को डेटा चल idea जाएगा। दैट वाज अ डाउट, दैट वाज अ डाउट विच वाज आस्क्ड। बट फिर उसे क्या कहते हैं डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हाँ हमने मास्क करके डेटा दिया एंड ऑल।
एंड मास्क करके डेटा का मतलब क्या है, ये भी आप बता दो। मतलब शायद मोस्ट प्रोबेबली वो जैसे कोई जैसे लक्ष्मी मार्बल्स है तो उसका नाम सरस्वती मार्बल्स करके दे देंगे, वो ऐसा है मेरे हिसाब से। ओके ओके, आई डोंट थिंक उससे कोई परेशानी आएगी। द मेन थिंग इज वीडियो, वीडियो प्रूफ ये लोग मांग रहे हैं ना। हाँ, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसका तो बोले कि वो सब मैं कर लूंगा, पर वो डेटा में थोड़ा सा उनको और समझाना है मेरे को। यस। एंड व्हाट अबाउट, सो फर्स्टली अभी जो सबसे पहला क्लोजेस्ट थिंग आ रही है वो है प्रपोजल ही आ रही है, तो प्रपोजल पे ही बात करते हैं। अ, पहले बिजनेस को अप्रोच किया, उन्हें समझा दिया, लेट्स से वो मान भी गए, लास्ट एक्चुअली डेट। मैंने उनसे पहले वो मना कर रहे थे, फिर मैंने थोड़ा उनसे बिजनेस, आप मेरे को अपना बिजनेस समझाओ, तो उन्होंने समझाते समझाते हाँ मेरे को उनकी ना प्रॉब्लम्स मैंने पकड़ी और उसको लिख लिया। हाँ फिर मैंने उनको बताया कि ये चीज मैं सॉल्व कर सकता हूँ। हाँ। एक्चुअली मेरे को दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिली थी। यस। सो उसके लिए भी थ्योरी आनी चाहिए ना, लाइक थ्योरी पढ़ी है तभी आप उस बेसिस पे। ना ना ना, तो कोई जरूरत नहीं है, थ्योरी का कोई रिलेशन नहीं है। सो हाउ डिड यू कैच द प्रॉब्लम्स? जस्ट अंडरस्टैंड द बिजनेस, कि वो बिजनेस करते कैसे है, ओके। और फिर वो बात करते करते ही बता देंगे कि हाँ मेरे को ये दिक्कत आ रही है, तो फिर मैं वहीं कैच कर लूँ कि हाँ ये आपकी दिक्कत है, तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ उसको। एग्जांपल दे सकते आपकी हो कि, डेटा, एग्जांपल कि लाइक। एक्चुअली जैसे उनको बी टू बी बी टू सी सेक्टर दोनों में वो काम करते हैं, पर उसके बी टू बी सेक्टर के उनके अंदर उनको प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। तो ये हो गया मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट मार्जिन इन बी टू बी सेल्स, हम्म। ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई। फिर उनका एक कॉम्पिटिटर्स से उनको है ना क्या कहते हैं, मार्केट शेयर बहुत ज्यादा जा रहा है जैसे, अच्छा, यस। ये इवन दैट। सेकंड हो गया। सो लेट्स से पीपल आर अप्रोचिंग, इसका क्या करना है कि लेट्स से हम डेडलाइन से पहले किसी कंपनी को कन्विंस नहीं कर पाए, देन? प्रपोजल बनेगा नहीं और नेक्स्ट डेडलाइन के अंदर डालो प्रपोजल, और क्या है। यस, तो एक महीना लग जाएगा ना उसमें। वो तो है ही। यस। वही तो मेरे को यही यही दिक्कत आ रही है अभी, कि मेरे को डेटा अभी वो कब तक देंगे। इवन किसी दैट। ने सेशन अटेंड किया तो गिल्टिंग वाले फेज में हूँ। प्रपोजल के लिए डेटा आपको एज सच हैंड में नहीं हाँ चाहिए. यू कैन वैसे, मेक द प्रपोजल एंड देन लेटर टेक द डेटा. यस। यस, पर वही दिक्कत है हुई ना कि वो बाद में मना कर दे तो प्रपोजल एक्सेप्ट हो तो गया। आप ना बेटर ये है, जैसे आप उनका प्रॉफिट एंड सेल एनालाइजेशन कह रहे हो, उसमें सबको दिक्कत होती है. इफ यू विल आस्क फॉर स्टॉक डेटा, वो आराम से दे देंगे. तो मतलब वो उनके अकॉर्डिंग आप अपना वो चेंज कर सकते हो. इफ दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल शेयरिंग सेल्स एंड प्रॉफिट डेटा, तो यस। आप अपना वो चेंज कर दो, स्टॉक एनालाइजेशन कर लो. ओके, एंड इवन वन मोर जैसे थिंग। वही इन्वेंट्री मैनेजमेंट टाइप ना। यस, इन्वेंटरी मैनेजमेंट टाइप। एक और इशू है ना, अगर इसे सॉल्व करना है, एक लेटर ऑफ अग्री, लेटर ऑफ अप्रूवल है ना, शायद एक लेटर लिखवा के भी जाना है कि यस वी आर गिविंग दिस डेटा टू द स्टूडेंट ऑफ आईआईटी मद्रास। वो प्रपोजल में नहीं चाहिए, वो सब मिड टर्म में चाहिए। ओके। सो एग्जैक्टली exactly. तो प्रपोजल पे डिस्कस करते हैं कि वो कैसे बनाए. उसके लिए डेटा अभी इतना एक्चुअली नहीं चाहिए, बट प्रपोजल हाँ, कैसे बनाए उसको डिस्कस करते हैं. यस। इसके और एक्चुअली इसके अंदर ये स्टॉक एनालिसिस में क्या, सॉरी, क्या? ये स्टॉक एनालिसिस में क्या कर सकते हैं, मतलब एनालिसिस में उनका बेसिकली स्टॉक, सी, कितनी तेज स्टॉक आ रहा है, कितना तेज स्टॉक मूव कर रहा है, क्या स्टॉक कम तो नहीं पड़ जा रहा। मान लो डिमांड ज़्यादा, स्टॉक मैं बहुत लाइक बहुत रॉफ, बहुत टोन डाउन मैनर में बता रहा हूँ कि डिमांड ज़्यादा है, स्टॉक आने से पहले ही बिक गया, या फिर आ ढेर सारा गया, बिक नहीं रहा, इस तरह। हाँ बेसिकली बस, स्टॉक आउट की सिचुएशन तो नहीं हो रही है. हाँ। हाँ, सुचित भाई बस इतना ही समझा रहे हैं सारे सेशन में, जितने भी सेशन में आप अटेंड देखो करोगे, मैं आपको बीडीएम थ्योरी की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके। नहीं, बट स्टॉक के लिए आप वो सेशन देख सकते हो बीडीएम का. हाँ उसका
उसमें बहुत अच्छे से कवर्ड अप है, लीड टाइम, एवरीथिंग, आपको कितना रिजर्व रखना है, वो सब सब एनालाइज कर सकते हो। यस एक्चुअली लेजर वगैरह सब बना सकते हो। हाँ, यस वो तो है। 5 6 तो इम्पोर्टेंट है ही है। ओके। 5 6 एंड 9 देख लेना है, बाकी टाइम मिले तो देख लेना है, ताकि प्रपोजल प्रपोजल के लिए 5 एंड 6 इंपॉर्टेंट है, राइट? क्या प्रपोजल हम रख सकेंगे 5 एंड 6 पढ़ के? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली। ओके। एक्चुअली प्रपोजल के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए अपने, मतलब बिजनेस की साइड से। उसका इंफॉर्मेशन क्या है, हम्म। उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, और उस मतलब और उसका बैकग्राउंड क्या है। इंफॉर्मेशन के अंदर भी अपन को ये चीजें चाहिए थी, जैसे कि उसकी ऑफरिंग क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, मिशन एंड विजन स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, हिस्ट्री यस क्या है बिजनेस की, यस फाउंडर्स कौन है, नेटवर्थ क्या है, वो बी टू बी बिजनेस है या बी टू सी बिजनेस है, या दोनों बोथ बिजनेस है, ऐसा। ओके। सो ये सारा डेटा, अच्छा ये जो आप जितना भी बोला, ये सब किसी एक डॉक्यूमेंट में लिखा था ना? आई गेस मैंने देखा था। प्रपोजल में ही लिखा हुआ है, इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, प्रपोजल फॉर्मेट। फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड, ओके। ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और वन एक टू। तो ये पढ़ना, मतलब एक तो ये वाला डॉक्यूमेंट देखना, और एक और डॉक्यूमेंट है बीडीएम, एक सेकंड का है। एक और डॉक्यूमेंट था यार वो, जिसमें प्रपोजल डॉक्यूमेंट, ऐसा कुछ ना कुछ नाम था उसका। सी, इस तरह शॉर्ट राइट अप ऐसा कर कुछ। हाँ, ऐसा ही कुछ तो था। सी ना, सामने स्क्रीन पे देख लो, सारे खुले हुए। हाँ हाँ, वही वही देख रहा हूँ मैं। एक सेकंड नीचे करना। उसके अंदर वो सब दे रखा है कि वो टाइम्स न्यू रोमन्स, 1.5 स्पेसिंग। अच्छा, कि देना कैसे, वो वाला ना? हाँ, वही वही वही। यस यस यस। बीडीएम डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ है नाम उसका। मम्मी, इसमें थोड़ा और डाल दो सॉस। वेयर वाज आई? यस। बीडीएम को किस तरह लिखना है, राइट? वो तो डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, आई गेस दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम, है ना? एक्चुअली मेन जो एक्सप्लेन करके चीजें उसी डॉक्यूमेंट में लिखी है। अच्छा, कैपस्टोन प्रोजेक्ट, आई गेस इधर हो। हाँ, एक सेकंड ये खोल लो। इसमें छोटे छोटे में दे रखा है, जैसे इन द प्रपोजल फॉर्मेट, स्टूडेंट, ये सब पूरी चीजें। प्रपोजल इज एक्सेप्टेड एंड ऑल, ओके। एक्चुअली मेरे को 2 3 डाउट है इसके अंदर, कि ये गैंट चार्ट कैसे होता है, और वर्क डाउन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कैसे बनता है, किसी को आइडिया है क्या? कोई समझा सकता है तो। सॉरी, नो आइडिया इसके बारे में। क्या क्या, एक बार बोलना। गैंट चार्ट, गैंग चार्ट? GANT। गैंट चार्ट? गैंट चार्ट बेसिकली होता है टाइमलाइन, आपका अच्छा, हर ये वाला काम दिखाता है, को, सी? ये वाला लाइक, दिखा था ना? अरे उसमें बहुत, मेरे को क्या कहते हैं, कुछ वीडियोस वगैरह कुछ है क्या, मतलब कहाँ से देखा था उसका? एक्चुअली मेरे को पढ़ना पसंद नहीं है, वीडियोस से समझना ज्यादा इजी, मतलब सही लगता है। Hello, Moto. अनु को देखा था क्या वो, ऐसा ये पूछ रहा हूँ। नहीं, सर ने लाइव सेशन में यूज की थी टर्मिनोलॉजी, तो इनफैक्ट मैंने ही क्वेश्चन किया था कि सर यू आर यूजिंग दीज टर्मिनोलॉजीज, बट इसके बारे में हमें पढ़ाया तो है नहीं है। तो तब सर हाँ, ने वही। एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली हर काम को स्टार्ट करने का पॉइंट, एंड इन हाउ मच टाइम यू एक्सपेक्ट दैट वर्क टू बी कंप्लीटेड, उस यस। उसका वो देना है पूरा हमें, ओके। कि हम कैसे प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। लाइक मैं 20 डेज लगाऊंगी सेल एनालाइज करने में, 10 डेज उसके बीच में से मैं स्टॉक भी एनालाइज करूंगी, लाइक लाइक दैट। सी, दिस इज ओके। अ गुड वीडियो ऑन इट। ओके। और वर्क देखो। ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है? हम्म।
वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, दैट आई डोंट नो। ये कौन से वाले ये में भी अपन को ये कौन से वाले मीट में बताया था, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड गंट का? फर्स्ट सेशन में। फर्स्ट सेशन में, ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन में? आई थिंक सो। ओरिएंटेशन में सेकंड वीडियो में होगा उन्होंने आई गेस। name लिया था एंड देन आई आस्क्ड एट द एंड, जब वो क्वेश्चन आंसर्स ले रहे थे। ओके। ओके ओके, सो हाँ मुझे पता चल गया कौन से दो वीडियोस है, उसकी मैं लिंक डाल दूंगा। आई थिंक इट वाज इन सेकंड वीडियो, पहले ब्रेक हो गया था फिर वापस स्टार्ट किया था, राइट? हाँ, यस यस। ये कहीं ना कहीं मिस हो गया होगा मेरे से वही उसमें। और सी दिस इज द गंट चार्ट। यस यस। ये वीडियो मैं डाल दे रहा हूँ, हम्म। चैट में डाल दे रहा हूँ, वहां से कॉपी कर लो। ओके, सो प्रपोजल स्टेटमेंट के लिए आई गेस सभी से जुड़ जाएं। कितना दिन लगा था आपको देवोत्तम? मैं तो एक 3 घंटे का डिस्कशन हुआ था कुछ शायद ओनर के साथ। उसके बाद मैं बाकी सेशंस देख रहा था कि और क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे क्या है। किसी किसी सेशन में ढंग से समझा, मतलब और क्लियरली। उसमें तो यही है, सब में यही चीज है यस। कि आप बिजनेस को देखो, एनालाइज करो, डेटा के बारे में समझा रखा है, प्राइमरी क्या होता है। मैं तो एक 3 घंटे का डिस्कशन हुआ था कुछ शायद ओनर के साथ, बेसिकली बिजनेस को उसके बाद कैसे करना है। सॉरी, सॉरी वो हेलो। आवाज डबल होने लगी थी, क्या हो? अच्छा अच्छा। हाँ मतलब बस वही, तभी मतलब मैं यही बता रहा हूँ कि वही, मतलब मैंने उनके इंटरेक्शन करके 2-3 ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स निकाल ली थी। अब मैंने कुछ ऐसे, मतलब अब मैं फिर से अभी कल परसों में उनसे मिलने जाऊंगा। तो फिर मैंने अभी ये बना लिया है कि जैसे मैं सोच रहा था उनका ओई निकालने का, अगर वो हाँ करते हैं, मतलब उसके रिलेटेड डेटा देखने का, देने का, जैसे सेल्स डेटा हो गया और ओके। शिफ्ट वाला डेटा वगैरह। फिर एक जैसे अनु ने जैसे अभी एग्जांपल दिया कि इन्वेंट्री वाला डेटा है, तो ये सब। एंड प्रपोजल में कैसे कर रहे हो? एग्जीक्यूटिव समरी में क्या क्या डाल रहे हो? एक्चुअली उसके अंदर ही 3 चीजें दे रखी थी। एक सेकंड, डॉक डॉक चलाना, वो वाला प्रपोजल वाला। बेसिकली मुझे क्या लग रहा है ना, जब मैंने ये डॉक्यूमेंट देखा, बार बार वही चीजें मतलब रिपीट हो रही हैं। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि नए नए वर्ड्स में लिखनी है वही चीजें कैसे अपन लिख। शुरुआत से ही देखते हैं सबसे हाँ पहले, हाँ, क्योंकि प्रपोजल जिसको डॉक्यूमेंट यही काम लाइन का बाय है। लाइन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसके अंदर पैराग्राफ 1 डिटेल्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट द प्रॉब्लम, पॉसिबल अप्रोच एंड सॉल्यूशन यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, दिस दिस आई हैव डन। जो हाउ यू आर एड्रेसिंग द इशू, इसमें क्या लिखना है? उसी के अंदर जो लास्ट पैराग्राफ बनाना है, इशू विल बी एड्रेस्ड बाय एनालाइजिंग, लाइक इसमें हमें पूरा डिफाइन करना है कि हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या लिखना है इसमें। एक्चुअली शायद ये वाली चीज है ना। एक सेकंड में वो, एक सेकंड, ये वीडियो देखी किसी ने वो वाली? क्रैकर्स वाली? हाँ, क्रैकर्स वाली। हाँ, ये सर ने अभी लास्ट सेशन में ही एक्सप्लेन किया था, जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर आर वी सपोज टू लाइक राइट डाउन ऑल द चार्ट्स एंड ऑल, तो सर कहते नहीं, यू सी दिस वीडियो एंड गो अकॉर्डिंगली। यस यस, वही कौन सा, वही। ये वाली? तो मैं वीडियो भेजूं क्या? मेरे पास हाँ वीडियो वीडियो भेज दो, पड़ी हुई भेज है दो वो, एक्चुअली। मैं ग्रुप में डाल दूं? ग्रुप में भी डाल दो, इधर चैट में भी डाल दो पहले। नहीं, वो डाउनलोडेड है पर।
उसका लिंक ईमेल में भेजी थी सर ने। ईमेल में एक सेकंड, दिस एक सेकंड है ना। नहीं, नॉट दिस वन। ओके हाँ मेरे पास एक सेकंड, इसका लिंक कैसे भेजा जाए। एक्चुअली मैंने पिछली बार बीडीएम प्रोजेक्ट और दोनों साथ में ले लिया था मैंने फिर इसको फिर यही सोचा कि नेक्स्ट टर्म में करता हूँ, तो पिछले टर्म में सर ने भेज रखी थी। ओके मेल पे थी। हाँ मेल पे थी, मैं मेल फॉरवर्ड कर देता हूँ भले ही। हम्म वो अपना भेज दो ना, मतलब इसमें इसमें अपना मेल चैट भेज के रहा हूँ। अंदर। उसकी हाँ हेडिंग फायर क्रैकर नहीं है। आप फायर क्रैकर्स करके सर्च कर रहे हो ना, आई थिंक वैसे नहीं यस मिलेगा। नहीं, एक्चुअली इसके अंदर वो उसका मेल, एक सेकंड मैं इसका वो भेजता हूँ, मुझे मेल भेजो, ये फॉरवर्ड लिंक। करो, मैं देखता हूँ। हाँ वो वीडियो क्या प्रपोजल के ऊपर बेस्ड है? हाँ, मतलब एक्चुअली अपन को प्रपोजल में करना है, एक्चुअली इसमें सब कुछ है, प्रपोजल भी है और मिड टर्म का चीज भी है, वही, तो अपन को आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रपोजल में हमें कितना लिखना है। वही अभी आई गेस देख वर्ड लेते लिमिट हैं। दे रखी है ना वो नहीं डॉक्यूमेंट में। नहीं, वर्ड लिमिट नहीं, मतलब जैसे अभी मुझे नहीं पता है कि कौन से मुझे टेक्निक्स यूज करनी है, बट वो भी एक्सप्लेन करना है, कितना करना है ये नहीं समझ आ रहा मुझे। लेट्स सी द फायर क्रैकर वीडियो देन। मैंने भेजा वो वीडियो, आया क्या? वही देख रहा हूँ। नो ओ एक्चुअली, अरे एक सेकंड एक सेकंड, आ गया। आ गया। यस ये दिवाली के टाइम पे भेजा था उन्होंने, पिछले। डाउनलोड ही करना पड़ेगा आई गेस। हाँ वही, ये मेरे को देखना था, मैंने खुद ने नहीं देखा ये वीडियो, पर इसके अंदर एक्चुअली सर ने बता रखा था अप्रोचेस वगैरह कैसे क्या है। ओके लेट्स सी। अच्छा 2 मिनट का है ना, देख लेते हैं। सर प्लीज कॉपीराइट मत भेजना, हम लोग सीख ही रहे हैं। एक्चुअली प्रपोजल अपन को ऐसे नहीं बनाना है, पर हाँ इसमें थोड़ा जैसे अबाउट है, ये पढ़ना ये पड़ेगा या वाली वो कुछ चीज, बोलेंगे? ये वाली चीज एग्जीक्यूटिव समरी और थोड़ा उसमें आ जाएगा शायद, बैकग्राउंड के अंदर हिस्ट्री ऑफ द कंपनी में। ओके नहीं, मेरा क्वेश्चन है इस वीडियो में पढ़ना पड़ेगा जो लिखा है, या वो लोग रिसाइट करेंगे इसे? पढ़ना पड़ेगा, म्यूजिक है सिर्फ। हाँ ओके म्यूजिक। so a firework industry is largely diverse and with a major unorganized component. The organized center is made up of small scale informal businesses that manufacture firecrackers without any registration or authorization. These facilities are usually found in rural areas and employ a large number of migrant workers. Okay. The sector is largely seasonal with peak output occurring in the months preceding Diwali, the festival of lights. Okay, Diwali. Chalo. Workers can earn up to 500 rupees per day during this period, as opposed to typical 2 to 300 rupees per day. However, the labor is hazardous, and accidents occur often, which is usually highlighted in the newspaper frequently in India. Okay, frequently in India, nearly 100 individuals were killed in firework related accidents in 2016. Okay, 100 लोग मर गए थे, यही है। The industry is concentrated in Sivasika, Tamil Nadu में।
ओके, आई थॉट नॉर्थ में दिवाली ज्यादा मनती है। छोड़ो, लेट्स नॉट गो देयर। Challenges. Here are some of the challenges faced by the firecracker industry. Safety नहीं है, pollution ज़्यादा करती है, and manufacturing illegally होती है। ये वाली चीज शायद उसमें आ जाएगी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, वो प्रॉब्लम में ये बैकग्राउंड। बताओगे कि बिजनेस इलीगल है। वो तो हमारा और गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, बिजनेस का थोड़ी प्रॉब्लम है वो। नहीं, उनका भी प्रॉब्लम है एक तरीके से। पर वो बिजनेस चलाना तो पड़ेगा ना। वही। The objectives. Let's focus on possible sample objectives which are useful under this industry. पालन डालूं। Understand sales trend, identify customer preferences and behavior, improve inventory management, optimize pricing, and enhance marketing and promotional campaigns. Okay. एक्चुअली फोरकास्टिंग क्या होता है, किसी को पता है क्या? सर ने इसका एग्जांपल दिया था और फिर बोला था कि फोरकास्टिंग 2 या 3 साल के डेटा पे हो सकता है सर। ट्रेंड Forecasting is को like तुक्का एनालाइज करना। लगाना, अनुमान लगाना कि ये चीज होगा नहीं होगा। लेट्स से हमें ये पता है होता है ना कि दिवाली के टाइम पे ही क्रैकर्स ज्यादा फोड़े जाते हैं, इसलिए वो ज्यादा खरीदते हैं, इसलिए ज्यादा बिक्री होती है, राइट? ये सर सालों का डेटा है। ट्रेंड्स, ये सालों का डेटा है कि हमें पता है कि हर साल इस टाइम पे तो फटाके बिकेंगे ही। यस। अब ट्रेंड्स लेट्स, निकालना मतलब यही है ना। यस, ट्रेंड्स निकालना। एज अपोज टू लेट्स से मैंने कोई नया प्रोडक्ट लाया, कि हाँ अब से इस फेस्टिवल में ये भी कर लो। ओके। मैं एक एग्जांपल देता हूँ अहमदाबाद का। गुजरात में वो चाइनीज लैंटर्न्स आती है ना, जिसे आग लगाओ ऊपर जाके उड़ती है, वो अराउंड अ फ्यू इयर्स बैक उसे बैन कर दिया गया था। सो बिफोर दैट इट वाज कॉमन टू, मतलब पीपल यूज्ड टू बाय फायर लैंटर्न्स, चाइनीज लैंटर्न्स। ओके। जैसे ही उसे बैन किया ना, पीपल शिफ्टेड टुवर्ड्स फायर क्रैकर्स। दिन भर पतंग उड़ाएंगे एंड रात में रॉकेट्स फोड़ेंगे। सो फटाके में भी रॉकेट्स का सेल अब तक सिर्फ दिवाली में अप रहता था, अब उत्तरायण में भी अप रहने लगा। दिस कोर्स इज टीचिंग मी यार। ठीक है, गुड, चलो। अरे सर यही तो करते हैं पूरे हर सेशन में यही डाउट सॉल्व करता है। ओके। अप्रोच, गैदर हिस्टोरिकल सेल्स डेटा। अरे अनऑर्गेनाइज्ड के पास से कहाँ से डेटा लाऊंगा मैं? बट नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड के पास किताबों में रहता, अगर फिर भी ढंग से गए तो। एनालाइज डेटा फॉर मेन बोथ। सी से मेन दिक्कत वही है, उसको उसमें लाना। कोई किसी कर रहा है क्या ऐसे अनऑर्गेनाइज पे काम? मैं तो पर्सनली नहीं करूंगा यार अनऑर्गेनाइज्ड पे काम, बिकॉज मेहनत बहुत ज्यादा है। ओके। मेहनत ज्यादा है। पहले तो उनको समझाओ कि हाँ हम कर क्या रहे हैं। उनको क्या मतलब कि तुम आईआईटी मद्रास से हो कि ये बाजू वाले सस्ते कॉलेज से हो, या तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो क्या कर रहे हो, उनको क्यों थोड़ी मतलब है। वही। एंड अगर उसमें भी अगर वो 2 नंबर का काम कर रहे हाँ, होंगे ये रहा तब तो अप्रोचेस बता देंगे। वाला। अनु जो पूछ रही थी ना, गैदर हिस्टोरिकल सेल्स। इंक्लूडिंग प्रोडक्ट लेवल डिटेल्स, कस्टमर डेमोग्राफिक्स एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज। ओके। फिर एनालाइज डेटा फॉर बोथ फेस्टिव एंड नॉन फेस्टिव सीजन। ये दिवाली के अप्रोच में चल रहा है ना, मतलब फायर क्रैकर्स के अप्रोच में, कि फेस्टिवल में कितना वही बिकता है और नॉन फेस्टिवल में कितना बिकता है। वही वही। यूटिलाइज डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स टू प्रेजेंट फाइंडिंग इफेक्टिवली। वही ग्राफ बनाने अपने पसंद के। अरे मेरे हिसाब से जैसे अपन का कोई भी जैसे बिजनेस का कौन कौन सा डेटा लेने वाले हैं और उसमें छोटा सा बताने देने का कि ये एनालाइज करेंगे। जैसे मैं सोच रहा था वही निकाल के प्रेजेंट करूँ, तो बस वही है। ओके। इस चीज को 400 वर्ड्स में कैसे लिखोगे? 400 वर्ड्स में? 400 हाँ, वर्ड्स में दिखना। 400 वर्ड्स में लिखना है ये। सी चैट जीपीटी ये लोग पकड़ लेते हैं, वरना मैं तो यही करता, जो जो मुझे पता है मैं लिख देता। चैट जीपीटी को बोलता कि अब इसे प्रोफेशनल एंड फॉर्मल लैंग्वेज में 400 वर्ड्स में कन्वर्ट कर दो, बस। अब वो नहीं हो सकता ना, वो नल पॉइंट एक्सेप्शन हो गया है। भाई अब क्या करें इसका? तो 3-4 बार अलग अलग उसमें डाल देंगे। पहले चैट जीपीटी से उठाया, फिर चैट जीपीटी वाला बार्ड में डाला, बार्ड का उठाया कौन सा ग्रामरली में डाला। ये 6-7 बार हाँ घुमा मैं देंगे।
मैं यही करने वाला हूँ। भाई अगर फिर भी पकड़े गए ना यार, तो यार मैं क्या करूँ? मेरी वोकैब अच्छी नहीं है, मैं क्या करूँ? अरे यही स्टेटमेंट्स को इतना लंबा लिखने के लिए तो किसी के पास भी वर्ड्स नहीं होंगे। भाई किसी के पास और वो हो ना तो ज्यादा बेटर रहेगा See, रिपोर्ट्स। see, there is a problem in this. That is much more we have to understand. That is, if we are going to explain this in a linear term, that means sometime we will point out just simple. We will mention simple points, but rather than mentioning simple points, we should say elaborate it a little bit more, even using simpler terms. I don't know whether you have whether you understood me or not, but that's why ओके, I'm trying to say. आई या आई अंडरस्टूड। से व्हाट एक काम करेंगे ना, अभी जितना हम लोग कर पाते करते हैं। कल टुमारो वी ट्राई टू ब्रिंग इन सीनियर्स, ओके, जिन्होंने कर रखा है। यस यस। टुमारो एक और मीट करते हैं और सीनियर्स को लाने का ट्राई करते हैं। Yeah, that will be really nice because they can actually guide us how to write it, like what the approach should be. वो तो सीधा बता देंगे। सी लाइक हम लोगों ने अब तक डिप्लोमा के जितने भी सब्जेक्ट्स किए हैं, अगर हमने जितने कंप्लीट किए, कोई भी आ जाएगा ना, आई कैन गारंटी कि मैं टीचर से अच्छा समझा दूंगा तुम्हें। सही है। अबिन, हैव यू सबमिटेड द प्रपोजल? ऑन विच No, स्टेट आर यू? not yet. Because I'm sorry for speaking in English. I'm not good No, at it's good, it's with okay, Hindi. it's okay. I'm from the south and I'm not good with Hindi, but I understand what you are saying. But I can't speak Hindi at that fluently. Okay, no, that's not a problem. ओके, Okay. नो प्रॉब्लम। I have not submitted the proposal because it was really difficult to get a vendor or a business to give us their data. In here and in most of the organization, they don't go by the books. So most of them have GST implications. So they won't be sharing any financial data with us. I'm So sorry, what most of them have what? GST issues. There are Actually, Okay, okay, he what taxation he is issues. saying is most of the businesses have data in their books. They are not in the digital format. No Main no no problem No, is no, no, that अरे only. वो वही He's दो they, नंबर talking के they, about काम they, है। taxation issues. No, Oh, okay. They do have the data in digital format, but Oh, even okay, for okay. small businesses, they usually tend to account uh, अरे differently. we understand, you're Yeah, saying yeah, that yeah. they So are same. hiding I their profits for taxes, right? दो नंबर का काम No, करते हैं। not exactly income taxes, GST transactions. Most of the transactions won't be GST transactions. They will undershow their GST transactions in most of Yes, the yes, yes, yeah, examples. yeah. yes, we The So they are same. afraid that whether they will get any future tax implication if they share this data with them. So most of the organization uh, won't be open enough to share their financial data with us. Yeah, okay. the So same problem what I am facing. and So same problem what whether many of us will face. so that's the main issue that it took me around 3 months to find a find a business that is willing to share the data with me. So see, I guess we all have to mail to IIT Madras and tell them to give us a assurance letter that their data won't be used anywhere else. So they do share assurance certificates. They do issue them. Where can I Yes. find it? Well, in your documents for download from your dashboard. Okay, for in documents for download, right? Just Yes. give me 1 second. Array. In I guess here. Just wait a second. In Documents for that, download. yes. And Uh, search for authorization. Search it. Search at the top. okay, search authorization. Maybe for this इस सेशन के लिए इन्होंने डाला नहीं है No, मतलब अभी तक। अभी तक if डाला you, नहीं तो how are they expecting us to bring it? no, no. If it's not shared here yet, then have you registered for this term? Registered the project this term? Sorry, what? Have you registered for the project this term for the Uh, previous term? yes, yes, yes. We are all new. Fine. So that's why you can't find the authorization letter here.
So I do have authorization letter. Can you Either on please my, share it? just give me a moment, please. Okay. I also have one. I registered in the last term, that's why. So share it, please. So, is it okay if I ask you where, which cities do you currently reside in? Me, Yes. I'm from Kerala, Okay. No, no, no. City, I, city. city Kochi. Cochin. Okay. Uh-huh. Devottam. I'm from Udaipur, Tier 3 city, only famous for tourism. You People are don't. not so mainly business people are not so educated here. So more, it is more difficult to find the business for our BDM project. Hey, don't let that limit you now. See, I am from Ahmedabad. I do understand how beautiful Udaipur is because that's our, you know, vacation destination. Yes. And Anu, Gurgaon. Can, uh, okay, can you see Gurgaon. my screen now? Yes, yes, yes. Share your screen. So here, just search for. So you will have the organization level here. This is the. So my name is a Bonavent student of PhD degree program at IIT Madras. Is actually to support the student to reach out to business industries establishments for their capstone project in business data management course. As a part of the project, the students are required to collect and analyze data from the establishment. We kindly request you to support them in this regard. The data provided will not be shared with anyone else and will be used for academic purposes only. We thank you for support and cooperation. That's what, and we do have to Make it provide a English. consent or a declaration to us that you won't be sharing or mishandling this data. So we have to Okay, sign this so and they pass it. might not have problem with the organization itself, but they might not trust the student, right? No, Like no, I no, can not trust. not just the students. So they actually don't know whether what we are going to do with this data. Even we are going to explain to them that we are such and such things that we have to do, but they Yes. won't be able to digest as it is, digest the matter as it is. I have one more problem question. Is it necessary for us, Abhin, to go and visit physically? Can't we do it in a like? No, have you seen the GitHub repository that was shared in the group? I'm sorry. Have you seen? Give me a moment. Have you seen the GitHub repository that was shared in the group? No. Just give me a moment. I will show that as well. So you will get a much more context from that, I believe. Okay. Okay. Hey, do you know anyone else like people who have already completed this? No, I think from my area, from my immediate area, I am the only person doing this course. No, So not from your Actually, area. Like, you. When was the first time that you took the? What was the term that you took this subject or project? previous term. Previous term, na? Yes. Okay. So okay, yes, that's actually there is one guy, Loveleen Chadda. I Can you see my screen yes, now? yes, yes, yes. he Okay. was very So, helpful in last term. so this is the repository that the person who has that was shared in the group. So this is the proposal here. I'm sorry. Where can I find this? It's shared in our the WhatsApp community, the BDM community, project community. Okay, so I So this might have was deleted it. My bad. so Could you this please was share this again in the group? oh sure, I will do that. Thanks a lot. Yeah, yes, So here it is, and these are the evidences that we have to submit. We have to present all these along with the proposal. This we are required to do in the proposal itself. Yes, we are supposed to do this in the proposal. Okay. So these okay. are if you read this, you will get some context on how to prepare the proposal. And there are all the term submissions are there. Midterm submission is here as well as Okay, the so final this is 10 a term submission. completed project itself. It's a completed project, I think. That's what mentioned in the repository But description. So rubrics must be different for this term, right? Pardon me, please. Like Actually, every term they change the rubrics for that, no? Yes, they do change them. So we have to be within that. So
See, but that this doesn't gives mean that a we have very to. broader idea about what and how to do. We will have a general idea on how to do things. We will have a context on how to do present this. That's So Yes. what it is. basically, Yes, yes. basically, we can. Okay, so while presenting or while doing a project, is it Mhm. okay if we simply copy what others have done? So let's say if the guy has done profit loss analysis or they have used Pareto analysis, if we Mhm. copy that, Mhm. will it be considered plagiarism? Well, it depends on data. But are we reusing the data itself? Then it will be considered as plagiarism. Okay, so plagiarism only consists of the data. I think at most 20% plagiarism is accepted. Okay, I think Only in that the won't sense make a of difference then, right? uh-huh. Pardon me. I don't think that would make a difference then, because I think what I think is if you copy the content of the report also, it will also be It considered in the plagiarism. yes, 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 it so we will be won't also considered there. we won't be copying. So we Yes, won't be able yes. to copy this even for the wordings. We can't just suppose if we are copying this proposal, we just can't change our name and roll number along with the shop details. Arey, my We won't buddy, be able to submit that. there are ways you can do this. Actually, there are ways we can do this. I don't know whether it will this get us into trouble or not. Just first we have to create a just generate it on any AI, maybe ChatGPT or any other softwares, any other AI platforms. Then later on, we have to rearrange the words using Grammarly. It will be much better, I think. So we Can can avoid use AI dependence. Grammarly, but not Chat GPT or Bard. No, no, no. We can generate a initial document or initial proposal using ChatGPT. Then copy the entire thing to Grammarly. They will give a different context on how to change that. They will give so many suggestions. After changing according to those suggestions, there won't be much of a thing. But we have to give some inputs as well. Otherwise, it will look too what to say too mechanical. It will look too mechanical to them. Okay. So could you please show the other documents, midterm and end term? Oh, sure. Af- and please give me your number. I really want to stay in touch with you, especially. I'm the group as well. I will share a number later on. Yeah, this is the midterm. Please, actually, can you share the link of this? I will share this link later on. Yeah. So in the midterm submission, there are a bit more detailed photographs and all those stuff. Some again, he have resubmitted those documents, snapshot of the data he collected, and revenues, all Hey, those. didn't sir, forbade us to use these bar graphs and all? Pardon me. Ac- No, no, it depends on the data we have collected. The best representation. I don't know if it's not necessary for us to represent it as graph charts or pie charts. It depends on the data, whether the type of data we collected, the thing we have to present. It depends on all that to which graph we have to select. But without financial data from this organization, we won't be able to do this project. For example, if we are Correct. going to analyze their profit and loss account, we need profit and loss account. If we are going to analyze their direct and indirect costs, we need to have figures from their balance sheet or Yes. P&L. If we are going to analyze their stock, but most of the people think that if we are going to analyze the stock, we won't need any financial documents from them. But actually, for us to uh, evaluate or study the stock, we need sales, then we need that purchases, we have to evaluate their EOQ, lead time stock, average stock. For calculating all this, we need to find out their sales. At the bare minimum, we need to find their sales or sale quantity. So we have to get that. So without the data, we won't be able to do anything. See, this time what Aditya sir said was he was, I think, really firm while saying this, that
I will not be even looking at the whole, I guess, PDF or whatever. If I Mm-hmm. see bar graph or Pareto. He Mm-hmm. was mainly reluctant about pie charts and bar charts. Mm-hmm. This is the Pareto chart actually, Mm-hmm. and he also you said to avoid the Pareto and pie charts with more than 4 to 5 divisions. He said, "I will not accept it." Yes, yes, Yes. yes. If And there because are many, yes, pie charts can't be pie charts can't represent more than maybe 4 to 5 at most. More than six, it will be more cluttered, and it will be tedious to understand from this. You see, we and have to identify. I don't know whether it is rice or not. We have to go through these indications to identify which one is which. So there are more items. It will be much better to represent them in other sort of charts. What also other sort of avoid. charts we can use? Pardon me. What other sort of charts we can use? uh, there are if you go to Actually, if you are a managing document. if you are managing the if you are doing your calculations with either Microsoft spreadsheet or Google Sheets, you won't be able to access much of the charts. But if you are using Python to manipulate the data, you will be able to you will have a variety of charts to choose from. How would you generate a chart from Python? I don't think they have taught us. Have they No, I taught us? don't. I don't actually remember. Actually, it is possible to generate using. There are, I Yes, it think, is the possible to math package. generate, but my question is, have they taught us? No, 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 no. They haven't taught us it. No, actually, they have taught us, but in different subjects, not in this subject. I don't think so. Okay, Basically, we are left with just scattered charts and There are bubble scatter charts. plot charts. There are area charts. There are different Gantt charts. There are different type of charts we See, can you know choose what? from. You know what? Let's stop this before we go. Divert too much. Let's focus on proposal for now Oh, yes, yes. because this is and midterm. one more thing, don't use 3D graphs. Actually, if you have taken BA, they they मतलब मतलब वो कुल मिला के 3D चार्ट्स पसंद नहीं करता कोई भी ऐसा, उसमें Uh-huh. बीए के अंदर बता रखा था Okay. So उन्हें नहीं पसंद है तो कुल Usually in मिला के academics, they won't use 3D charts. 3D charts, Okay. even in the industries too. And also, They do use what 3D charts, this, but just for the PPT presentations, yes, 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 but not for reports. yes, avoid using 3D charts. And what I think, we can use any subject's knowledge in this particular project, I think. yes. Can you give example of any mathematical tool or statistical tool which we can use? Actually, most of the learnings of the business analytics course can be, I think, can be used in this I haven't taken project. that course Yes, yet. I'm I going also through take, business analytics BA actually during my current time. I'm taking BA, so I think yes, it will yes, something same. might get useful to me. I really found BA very useful for this project. Mm-hmm. Can you name any techniques? Like we'll search them online. Let me show. I don't know whether I have these projects with me that I have already done. Actually, this project has a very large scope, and we are taught very little about this. Actually, basically this is a project that should be done in a done in groups of at least 4 to 5 people, or else it will Correct. be it's practically impossible to present a. That's why the person who has submitted this show only collected data for 30 days, just for 30 days. See, if even if But it's now, hard, even if it's hard for those of us, are you just doing this degree as a solo? Are you doing this Me. degree as a solo? no, 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 no. no. We at the beginning of the projects, it's already mentioned that you can do these projects in groups of 2 or 3 people, 3 or 4 people. I think No, they have they forbade they have us all in making groups. they have already they have no issues forming groups.
They have already mentioned that somewhere. I don't know where. I don't remember where it was, but they have already mentioned that either you can form groups to perform this. But the thing is that if we are going to just simply grow for a grocery shop for this grocery shop for this project, then it is though it is not suggested that we should it's not as big as we think, but they will be expecting us to do perform this kind of projects on a bigger scale. But if you are forming groups, maybe a shopping mall, maybe a uh, what we say that But I think to be on a safer side, we should avoid that. Yes, because they will just to give us one-liner answers, even if we justify. Yeah. Like, come on, you want us to be professional? Be professional yourself, man. The answers they reply to mail is, mashallah. uh, they are too bad at that. They told us we have to be very formal, we have to be to the point while writing the mails to them to support, but the reply is really Yes. See, let's continue with the video. I guess we okay haven't fine. completed this video. Okay, fine. Approach. We have completed approach. These are the data that have to be focused on, right? Sales data, inventory data, customer data, and market data. I mean, could you please I think elaborate? I think this can also be written in approach thing only. See what data we are focusing upon: sales data, inventory data, customer data, market data. Yes, this would be the data that I would be collecting. Yes, yes, yes. Okay. I have just shared the project again, the GitHub repository again. Please check whether you have received it or not. Okay, edit. Just give me 1 second. Where have you shared it? Yes, yes. In Receive the group. group. WhatsApp group, right? Yes, yes. Okay. Let me open WhatsApp here. At least there has to be someone. Okay. Let me mark this. According to me, what should be our approach is I we should see the recordings, previous recordings. I think Sir also had shared the old reports in those recordings. Yes. Mainly focus upon the old recordings, and we can interact with the seniors too, so that we can get maximum things what we have to write in the proposal and these things. Exactly. That's what I'm saying now. In a day or two, let's arrange a meet with seniors. Yes, old projects will only help us, according to me. Yes. Let's go through this video really quickly. Data cleaning. Okay, so identifying duplicates, handling missing values, uh, standardizing data formats, validating data. What is standard? Consistent data formats ensure uniformity. Enriching data, adding relevant information to enhance the data completeness and usefulness. Okay. This Uh, can also be written in the approach part that I did clean the data, will clean the data. That's that thing. yes. So we can explain that we have collected this data. So from that we will No, we be will be collecting because this is just a proposal statement that we are Proposal submitting, state. Mister. see in most cases if those establishments that do not follow an organized business model, they won't be having any organized accounting models or accounting softwares to keep their accounts. But in most organized cases, they will be providing you with charts in the sense reports for their sales or maybe balance sheet. There will be a
printed format for that. From that printed format, you will be able to just grab the data that you need. That's what's mentioned here. Okay. Metadata and stats analysis for an organized sector like firecracker business. Metadata plays a crucial role. What is metadata? Metadata provide information about your data collected for blah blah blah, making it easy to understand. It plays a critical role in organizing and contextualizing. They're often scattered and heterogeneous data. Okay, metadata We don't analyze. need this in proposal. We need this in the midterm stage. Okay, why to do about to? Okay, I don't want to know. You just said I will do it. Approach to analyze data. I think that is for midterm. No, 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 no. Approach is for this too. Approach to analyze data. I think it's midterm. There are some of the techniques will be Okay, useful for yes, the yes, yes. analysis. Yes. Okay, 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 okay. Bye sir. Bye sir. Okay, so this guy is Balika, and that guy is Chandil. Yes. Okay, I thought he was Chandil and he was Balika. No, no issue. Authors. Sample count for a student prepared by Aditya Chandil and Ashwin Balika. Okay. Oof. So even if anyone gets old BDM projects, Mhm. you please share it in the group. Okay. So I guess we would have to first arrange a meet with seniors. Yes. That's the main problem. That's the main issue that we'll be facing. Yes. Till then, it's advised to start approaching businesses. And okay, so what would let's say I know nothing and I go to a business. What do I say to them that I'm a student of IIT Madras. I'm doing a project. Mhm. What after that? Yes. So you have to explain what the project is. We are here to study your business. So from if we will be collecting these data from you and analyze it, and we will be able to understand whether you have any if whether there are any issues with your current ongoing processes or ongoing any issues with. We will be analyzing any issues, and if there are any issues, we will try to find out or try to provide a solution for it. And what the answer you will get is my business is very good. I don't have any problem. Then I face the same problem. Then I ask to explain the business, how you do the business. Mhm. And when they explained me the business, I caught them that here is the problem for the examples I have shown. I showed you. Okay, so let's We say have to I communicate a explain. lot with them. We have to Let's say I Yes, talk with yes, them explain a yes. you lot. my We business. have. Okay, let's say I Suchit Sharma explain you my business that I do this, and this. Hmm. How would you now tell that? Okay, now that I know your business, what I will be doing is dash fill in the blank. So I will be analyzing this and find out why that is happening to Actually, you. That will be main your answer. thing is ask for the problems what they are facing. No, no, Main no. thing We is the can't. No, problem we can't statement. ask them. So we can't ask them that. So most of the business. Yes, So yes. if we ask them, no, my business is doing well. There are no issues. Most of the owners will be answering like that. We have to talk with them. Doing with continuous, what to say, conversation. We will be able to. We will be only able to understand what the issues happening in between. Yes. So there might be some hidden costs. Maybe there might be some unnecessary costs that happens. For example, the particular uh, business is Mhm. subscribing to a, suppose they have a hosting plan, web hosting plan, and they are paying a web hosting fee for the service provider at the rate of 10,000 an year, and there is no actual website running for that particular hosting service. They don't know whether they have, in most of the cases they don't know whether they are actually running a website or not, some cases. So we will be saying actually there is no website for this particular, or there are, you are simply no, for you are spending this money for no reason. You may be able to save this 10,000 rupees or maybe the amount
involved in that particular transaction. Yes. Do you get me? Yes. 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 So we have to identify that ourselves. If, for example, in another case, there maybe there will be a market trend for all these cases. There will be a market trend in all businesses, whether it be organized or unorganized. There will be a market trend. So if you analyze initial state, when you analyze data, if there are variations from these general trends, you will be able to identify if the issues in that particular area. For example, there is a shop. He's spending he's paying an electricity bill of say 10,000 per month, but in the surrounding area for for the similar businesses or maybe a similar room, the electricity bill may be considerably low. So there may be issues with their connection. So we will be able to identify as such. If it is a grocery store, we will be able to we may ask them in the past month or past week, how much of the vegetables or the food have you thrown away as waste? So, and we may be able to understand that. So, if he says we only just threw away a kilo of tomato, maybe 5 kilos of tomato, maybe whatever quantity it may be. So, we will be able to, then we can say we can identify that there is a problem with managing the stock. So, we can analyze that particular area in depth. So, that's how we come to a conclusion they are facing a particular problem. That's the only way. Okay. Okay. Or the other ways, the particular uh, organization or business won't be able to that if there is a business requirement for them. They are asking us, I want to run a website. They are asking us, they want to run a website. What should I do? Then we can say then we will be able to get a more comprehensive picture about that. So we will study them. Without studying the data, we won't be able to reach any conclusions, or we won't be able to find any problems there. Hmm. Actually, what I've done just this only, just discuss the business with them and catch their words. यहाँ मेरे को दिक्कत आ रही है ऐसे करके, तो हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ ऐसा. Okay. So, before anything, is there anything else you guys would like to add? बस यही Not था. really, actually. Sorry. Not really, actually. I think most of you will get a primary context on how to do things on from reading this repository that I have just shared. You will get Yes. most of you might get on context on how to do things from that. Okay. And try not to just copy and paste this in your project, Yes. but just get an understanding on how to do things and try to reproduce it yourself in your own Yes. words, maybe. Yes. And if anyone gets more projects, please share it in the group. Okay. Oh, And before leaving, actually, let me share you this. Okay, this is just a fun group that we have, but do join this group, please. Okay. How do I share it? I don't know. Thing is, we made this group for BDM project itself. Let me. How would I add members? Is there a link or something that we can do? You can share the invite link in this yes, meet. just share the invite link in the meeting. That's right. How? Are you the admin of that group? No. Admins can only share the invite link. Yes, I think so. Okay. And I'm sorry, guys. I just made your day worse by coming in and speaking in making the entire meeting in English. Sorry, okay. No. Actually, the thing is, from now on, I would be, trying to speak in English as much as I can. Yes, you My have English to is do a the. bit rusty because the thing that we would be submitting, I think that would be in English itself. Yes, we have to present the Yes. project in English. We have to present the PPT in English. So I think speaking in English might revamp or reboot our English
fluency maybe. Yes, Yes, as you have seen, I am also not very fluent in English, so I will haven't I haven't spoken a word in English since past 6 years, so my English is a bit yes. cluttered. same Can you same. believe I used to be a district level champion in debate in English? Now it's just It's getting those worse and worse those by were day. the days. No, That just see, reflects. I used to speak Hindi, English, and Tamil really fluently, Yes. but I still can understand what you guys are saying in Hindi. But Ye- to respond it will be really difficult Yes. to piece together a sentence in Hindi. Okay. So I know how to respond, but it's really difficult to piece together a word. I have forgot most of the vocabularies in yes, Hindi yes, and all. that's the main problem. Most of us have forgotten the vocabulary itself and the grammatical part. Before we go, I have one thing to share. This Oh, someone February has raised term, a hand. yes, Sunay. Hello, am I audible? Are Ah, yes. 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 From first to fifth, what we like to follow except for the Your day. voice is cracking Sorry, up Sunil, you a are lot. too breathy. There's Your voice is cracking up a lot. What all we have to submit first? Actually, are you wearing the earphone, Sumaya? No. Just keep the Could you mic a please little away type from you, the query? Could you please type the query because it's really intangible for us to understand what you're saying. or else just keep the mic a little distance away from you. Yes. That may help. Yes, yes, yes. And secondly, guys, before that, I have to address one thing that this from this February term, I guess every alternate night for half an hour or 1 hour something, I would be trying to improve my English, and I invite you guys if you want to. What do you have to Except for the suggest? in the proposal itself, we have to submit all the details. I No, no, think no, we no, have no. already. His question is something else. We don't have to submit anything else except the proposal. No, no, we have to just submit the proposal. That's all. And follow the rubrics religiously, and that one also the document that Where can showed we find the rubrics? It's in actually those. when you go to the project dashboard, we can access the rubrics from there. Okay, so this Actually, is it is grammar. of old thing. This I one, think it's updated regularly. I think. this one. No, no. The timeline one document is old one, but in Uh-huh. this documents folder, this is the old one. Yeah, Okay. it is showing May 2023 down there. Yes, yes, yes. See, Oh, But okay. in the that folder, drive folder, it is updated. what is the name of this? What's the name? I think it was rubrics only by the name of BDM Project 2024 rubrics. Yes, this was the project document I was talking about. It has all the things. The हम्म, uh, मतलब जो मेन चीजें अपन को देखनी है Yes, सब. Mhm. every submission should be should strictly adhere to the rubrics. It does. If it does not adhere to it, you end up losing marks. Format and structure your reports the way we have done here. Okay. And Format rubrics is another document. This is the document which explains the rubrics, and rubrics is another document. BDM capstone rubrics. Okay. You have to follow these religiously, these both the documents. This is an independent research project. I think he discussed it in the video itself, right? I think so. Yes, Those who have yes, yes, watched the video on I guess 19th, he yes, discussed this. Yes, so I yes. have a really good idea what this is. For anyone watching this, you know where to find it. Read it. It is really important. Even I can say it is really important. Yes, Yes. first to fifth is the deadline to submit proposals. I always say keep it first to fourth. Many of the seniors said that no, fifth would just mess you up because many of the students forget on the last date, and even Uh-huh. on the last date it's at 1 p.m. only. So better to do it at fourth. Okay.
but I Anyway, we have to won't be able find to. that business which will give me the data. Anyway, we Yes. won't be able to submit next month, so you shouldn't bother about that. Yes, but the thing is, it would take time, na. I'm Yes, then it would take a month more. Correct, it will correct. take a month more. So during that time, but just because we were not able to submit the proposal, we can still work on the project. Yes, I can work on project, but the problem is, let's say I gave proposal, they rejected Mm-hmm. it. Mm-hmm. Second time I gave proposal, they did not reject it, but they rejected midterm. Are Mm-hmm. you getting what I'm saying? Yes, yes, It's I not do get about it. But it's usually not about the how reject, what I can do. I think usually the rejection is not because of the organization or the data we have collected. The rejection is happening because of how we prepare the proposals or the reports. That's why the rejection is happening, not because of the data or uh, actual. Yeah, Uh, I got your point. I got your point. uh-huh. So people might not have followed the rubrics, or they may have Oh, yes. plagiarized the data. Data. That's the only reason. Might I think that might be the major reason why the proposals or the midterms getting rejected. Okay. Otherwise, there won't be any issues. And I think we will get a context on why the proposal was rejected. I don't know whether it's true or not. I think, and I believe, and I hope. That's what I can say. They will give a reason as to why the proposal or the reports were rejected. Okay. So I guess we can end the meet now. Oh yes, yes, We have I have learned a lot from this meet. Okay, and I thank yes, yes, both Abin and Devottam, even Mittal. So follow the rubric religiously. Yes, yes, yes. I yes. would. We have to do that. Actually, I was They will check for the answering to the plagiarism. Sunay. Okay, 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 okay. They will check the plagiarism thoroughly, even if it's 20 percentage. Uh, they will thoroughly check the plagiarism, and I think mostly the rejection is happening due to this plagiarism, and you have to follow these rubrics rigorously. Okay, so That are the only two things, and the data should be valid and authentic. Those are the three things that we must follow. No matter what, we must follow these three things. The data must be authentic and genuine. And second, the plagiarism should be in check. And third, you have to follow the rubrics rigorously. You have those are the basics for doing this project. And any of you from dev background? I no, mean, development backgrounds? no. Actually, yes, I am. Oh, what are the stack we are working on? Actually, I learned. I have to do the Mad1 project too, no? So I have learned the HTML, CSS, JavaScript, and Flask Oh, oh, oh. for that. So okay. I'm If going you through my have done Mad that, one as of now, so I was just asking whether, so I could find someone to look out for in case I do find some difficulties. Yeah, yeah. I have to do Mad1 project too in this term only. See, the basic thing is that in most cases, the during the COVID time, most of the online courses just marketed their courses like just learn this programming language and you are done. You are a program developer now. Yeah, yeah, yeah. But actually, that is not the fact. We have to understand a lot more to become a good developer. You have to learn Correct, correct. algorithms. You have to learn the data architectures, all those stuff. If we don't learn those stuff, learning a couple of programming languages mean nothing. Yes, Makes no sense because actually most of the programming languages are the same. Just yes, just minute differences. so before yes. we Only the go in syntax that changes. section, excuse me, before we go in that section, let me end the live stream, Oh, and let me thank you both for your support.